कल हाँ, परसों पूछो में ना। देखा है कि जो मोड आउटपुट पुश पुल है ना, हाँ वो और नो पुल अप, ये तो दो हाँ अलग चीज है ना। पुश पुल मतलब वो मॉसफेट में आता है, ड्रेन और सोर्स का, हाँ ओपन ड्रेन और ओपन सोर्स का, ठीक है। हाँ तो ये नो पुल अप, तो ये और ये आता है इसमें पुल अप और पुल डाउन, तो हाँ, ये अलग है ना दोनों। ये दोनों अलग चीज है। पुश पुल जो है वो आपका पिन कॉन्फ़िगरेशन है, और जो पुल अप पुल डाउन होता है, नो पुल अप है, ये आप उसको डिफाइन कर रहे हैं कि आपको सिस्टम में पुल अप डालना है कि नहीं स्पेसिफिक पिन पे। ओके ओके। हाँ, और तो पुश ये पुल। पिन पिन को डिफाइन करना होता है हाँ कि आपको, हाँ मैं क्या कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, नहीं तो वो फ्लोटिंग पॉइंट में रहता है, ऐसा इसलिए क्या? नहीं, हाँ, अगर आप पुल पुल अप पुल डाउन नहीं डालोगे तो फ्लोटिंग में हाँ। रहता है, पर उसके दो तीन चीज़ें मोस्टली इनपुट के टाइम पे आप कर सकते हो, फ्लोटिंग पे रहता है करके। हम्म पर सर मैं अगर बताऊँ तो जो हमारा मोस्टली जो एसटीएम होता है उसमें हमेशा एक स्लाइटली पुल डाउन हमेशा होता है, उसमें स्लाइट पुल डाउन हमेशा मिलता है। मतलब आप रजिस्टर लगाओ या मत लगाओ, पर वो स्लाइटली पुल डाउन हमेशा एसटीएम रहता है। पर ये जो पुल डाउन जो दिया हुआ है, ये उसको मतलब प्रॉपरली पुल डाउन करके रखता है उसको। ओके मतलब स्लाइट पुल डाउन हमेशा मिलता है एसटीएम माइक्रो कंट्रोलर में, और जितने भी मॉडर्न ओके माइक्रो कंट्रोलर्स थे उसमें उनका डिजाइन ही उन्होंने वैसा बनाया उन्होंने इंटरनली। ओके ओके। हम्म। थैंक्स क्लियर करने। सबसे पहले यहाँ पे हम अपना कॉन्फ़िगरेशन कर। आपने जो सवाल पूछा है बिल्कुल सही है, फ्लोटिंग में रहेगा वो, पर ये मॉडर्न माइक्रो कंट्रोलर में उतना सही नहीं है। ओके। हाँ, पुराने माइक्रो कंट्रोलर में सही था। यहाँ पर अभी क्या हो रहा है पता है क्या, ये क्लॉक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, या आप चाहो तो मैन्युअली आप रजिस्टर के थ्रू कर सकते हैं। पर आपने अगर कुछ गड़बड़ किया तो आप किसी आपका प्रोसेसर को जो ओवरहीट कर सकते हैं, ऐसा चांसेस होता है पुराने माइक्रो में। अभी केस में तो वो डायरेक्टली एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इनवैलिड आने के बाद में आपका जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो इनवैलिड हो जाता है। ओके। और टाइम लेता है ये सारे सिस्टम्स करने में। ठीक है, जब तक ये रेडी होता है तब तक ये काम करते हैं। मैं आपको अ, तब तक मैं ना एक एलसीडी के बारे में मैं आपको सिखा रहा था कि एलसीडीज एक्चुअल में क्या होते हैं। ओके। ओके, मुझे लगता है कुछ और लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इसमें, तो ठीक है। ओह, सिर्फ दो ही लोग हैं आज। ओके। हेलो। यू probably don't understand like हिंदी, राइट? तो मुझे भाई अब थोड़ा इंग्लिश में शिफ्ट करना पड़ेगा, बंदे को कुछ आती नहीं प्रॉपर्ली, मतलब हिंदी। ठीक, दोस्त। ठीक, sure, ठीक। So, I just want to know how many people know about the normal LCD, 16:2 or something like that. Hello, hello. I have a question to ask. How many of you recognize this kind of LCDs, liquid crystal display? जवाब तो दे दिया करो कभी। ठीक है, डायरेक्टली पूछता हूँ। सबसे पहले अभी हम जिन LCDs के ऊपर काम करने वाले हैं, ओके, फिर से बोल दो। Lately, I'm saying you that this kind of LCDs are extremely common in current, even our in our current electronics industry, and we are actually seeing it in practically everywhere. Okay, and to control them, we need to do a manual GPIO manipulation to access this LCDs. Okay, and in modern microcontrollers, we do get some LCD interface peripheral, but they are meant to be for significantly higher pixel rates, and those LCDs just come with their own different kind of interface. Okay, then we need to understand how actually we can use them. Let's just find out some useful LCD diagram.
so we can understand them better. Okay. Okay. Let me just open this. Open a new tab. Okay. Here we got an LCDs illustration for an LCD. Okay. We did got some few pins here. One is the VSS and VDD, which is for the power and ground. VSS for ground, VDD for positive power. VEE is for density, or should I say, uh, if you want to like put some kind of it's just for like showing your display density, like intensity of your display, like your characters and everything. VE is for that. You need to provide a certain amount of voltage. Okay, and there is a RS, RW, and E. This is like super important. It is read write. RS is for like providing the information that the data is which data is being provided, which is command or the data, and E is for to give it this instruction that just read this damn data now. And this is the from 0 to 7 is there is it is this relay. It has two configuration. One is the 8-bit and one is the 4-bit configuration. Okay, and it is LCD A and LCD-K is for anode and cathode for the backlight LEDs. Okay, so here's like super small brief for your LCD. Okay, just and let's get to the Proteus first, and we will understand what I am actually meant to say. Okay, okay. Let me just start my Proteus. Oh, well, today I'm actually going to show you some website too to understand and how you use those website for your own benefit. So STM32 401 E, and there will be LCD 16. So we can't see your screen. Okay, you Please can't share see the my screen. screen. Yeah, yeah, yeah. Then always like tell me that you can't see my screen. Okay. Okay. I'm pretty sure now you can see my screen, right? Right, right. Yeah, good. Yeah. I wasn't doing anything. Okay, it was a lot of screen different kind of creation size. Okay. Okay. Here we actually already selected our LCD. Let's select port. Okay. Whew. Okay. Here we got our LCD and my controller here. We need to connect it, and here we will start connect the D0 to A0, D1 to just like that. It's parallel to parallel 8-bit interface. There is other which is the 4-bit interface. It's more like a parallel communication interface. Can you tell me how many of you are actually familiar with the this kind of LCD? Hello, हेलो आमिर जी। आप बोल रहे थे आपको आपने मेरा वीडियो देखा करके जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, हम्म, कैसा लगा? मैंने देखा था। कैसा हाँ, लगा? अच्छा था। ठीक ठाक पढ़ाता हो कि नहीं? अ,
मतलब टीचर के जैसे नहीं, बट हाँ अच्छा है टीचर वो। टीचर के जैसे जैसे नहीं पढ़ा था मैं। हाँ, वो बोरिंग एक थ्योरी उठाया, बस समझा रहे, कुछ सीखने को नया मिलेगा। ठीक है। अच्छा, मतलब कि मेरा हम्म, तरीका हम्म, अच्छा है कि बकवास है, पहले ये बता दो। नहीं अच्छा है, बेटर है। बेटर है, टीचर जैसा नहीं है। नहीं, मतलब बोर नहीं होगा इंसान, है ना। आओ, हम्म, अंधा बोर्ड नहीं होता। अरे यहाँ पे मैं उल्टे से जोक्स ही मारता रहता हूँ। हम्म। वैसे मेरे नॉन वेज जोक ज्यादा बेकार तो नहीं हो जाते थोड़ा ना? सा मेरा मेरा फीडबैक रहेगा ना, थोड़ा सा हाँ, जो मतलब प्रोग्रामिंग करते हैं ना, उसको थोड़ा सा डीप में अगर एक्सप्लेन करे तो क्यूए के जो बेटर है। न्यू कमर्स है ना, न्यू लोग हाँ, उनको, हाँ बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये बेनिफिशियल। कनेक्शन वगैरह तो सही है, सबको समझ हम्म, में आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का ही इशू होगा। तो वो रजिस्टर वगैरह कैसे सेट करते हैं, वो सब थोड़ा डीप वो में मैंने अगर अपने फर्स्ट क्लासेस में लिए एक्सप्लेन। थे, तो अभी हम्म, काफी सारे बंदे जो है वो प्रॉपर टाइम पे नहीं आए, ओके ओके ओके। तो उसकी वजह से अब उनको इशू हुआ। नहीं, ये पेड वाले में अगर, हाँ, वही पेड़ वाले में भी क्या है कि काफी सारे जो लोग हैं ना, हम्म, उनमें काफी सारे लोग मतलब ऐसा कहो कि सारे मतलब फर्स्ट कुछ एक क्लास में आए, कोई दूसरे क्लास में आए, तो ऐसा हुआ। हम्म, सारा इशू ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अभी अपन लोग प्रेजेंट करना है something else। ठीक है, इधर में हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। जस्ट बिल्ड कर देते हैं अभी हमारा जो सोर्स कोड था, टेम्पलेट है हाल का। ओके, हमारा हाल टेम्पलेट भी क्रिएट हो गया। तो आपके हिसाब से मैं कोड अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता, राइट है ना? नहीं मतलब हाँ थोड़ा सा डीप जा सकते हैं, आई ठीक है, थिंक। फिर इस बार डीप आपको जाएंगे हम लोग, ठीक है। आपको लगता है, आई थिंक आपको लगता होगा बोर है क्या, बच्चों का जैसे समझाना, लाइक, हम्म। है ना। हम्म। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम कुछ चीज़ देखना वाले हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर एक है नॉर्मल हमारा जीपीआई इंटरव्यू देने वाला है, हम पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन में रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पे पोर्ट A0 टू A9 तक हमने यहाँ पे पोर्ट्स को यूज़ किया है, पिंस को यूज़ किया है, ठीक है। पोर्ट ए, सॉरी, पिन PA0 टू PA9 तक हमने यूज़ किया, इस चीज़ को हमें याद रखना है। ओके, हम सीधा इंग्लिश। यहाँ पर आएगा, या तो हमें इन सभी जो जीपीआई पिंस है इनको हमें कॉन्फ़िगर करना है। सबसे पहले मैं एक सवाल पूछूंगा, अभी आप लोग इनपुट दीजिए, मैं आपको इसमें बेयर मेटल में सिखाऊं कि आपको हाल में इसको कॉन्फ़िगर करके बताऊं, पिन कॉन्फ़िगरेशन? चलिए, एक काम करता हूँ, अभी हमारे इसमें कुछ लोग हैं जो को बेयर मेटल कोडिंग उतनी अच्छे से नहीं आती है, और जिनको बेयर मेटल आती है थोड़ी बहुत, और मेरे पुराने क्लास वाले वो समझ रहे कि मैं क्या कर रहा था। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम हाल में करेंगे ताकि लोगों को डायरेक्टली समझ में आ जाए, ठीक है। क्या करेंगे, हाल अंडरस्कोर RCC, उसके अंदर GPIO A, हम क्लॉक इनिशियलाइज कर रहे हैं हमारे पोर्ट ए का, हमने यहाँ पे क्लॉक को इनिशियलाइज किया। ओके, someone is telling me to do it in English. Okay, so what we are doing here is right now is we are just initializing it in the HAL interface, initializing our GPIOs with the help of a HAL. So in this first 76th line, we are actually initializing our port A's clock, so we can manipulate our GPIO port. Okay. Second thing we are going to do is we are just going to make a variable which will be GPIO type def, and there will be LCD pin. Okay, LCD pin. Okay, we got LCD pin. LCD pin. Okay, LCD pin dot pin. We have to put that how many GPIO pins we are using. Okay, it will be 0 to 7, right? We are using like 0 to 9. It's like a lot of pins we are using here. So
Yes, you're providing GPIO. Then I'm not going to type it all. Yeah, definitely I'm not going to type it all. Control C, Control V, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ. Okay. Okay. Let's check that a lot. And it will tell me what I'm doing here. 5, 6, 7, 8. Okay, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. GPIO 10, 9. Okay. So all the 9 GPIOs we have provided this information that we need to for it. Then there will be like a mode which will be GPIO motor output push pull mode. Okay, we set it as an output push pull mode. Then there will be LCD pin. Uh, we are actually going to use like no pull GPIO no pull up no pull down. LCD pin dot speed equal to GPIO STEED speed is equal to low. Yeah. And finally, we are just going to initialize the system. GPIO initialize will be GPIO A and provide it with its variable address, which will be our LCD pin. Okay, it is just directly going to configure our LCD here. Okay, but then Sir, like sir, I have a question. yes, Like you have written, please scroll down, sir. just a Scroll it minute. down, sir. Yeah, Yeah, yeah. Sir, here you written like GPIO mode output PP, yeah, it's and out. Yeah, sir, where it is defined it is this actually term. defined. Yeah, this is actually defined into the HAL's support system development kit. I can like literally show you where it is defined. Yes. Here you can see that they have actually typed up this structure of the code here. As you can see, it is the UNT32 pin mode pull Okay, speed and okay, alternate. okay. This is actually only for the function which we are actually using, like this function, to understand what information you actually want to deliver to it. Okay, we are just providing with certain kind of structure. It's like a kind of a protocol. Okay, here you can see every information we actually provide it. It actually segregate it first to understand what we actually want to tell it. Like here you can see the GPIO initialization, this especially with this structural code, structural variable, which has been used inside this specific system throughout to understand what we actually want to tell it. Like here, GPIO init, it is checking that mode and what the information is getting, and it is using it for that specific purpose. Okay, it is quite long code, but yeah, it is using all of that to configure everything. Okay, Okay, okay. okay, okay, position, GPIO number. Okay, it is using like everything here. Assert, okay,
सर आप Next, इसमें हाल यूज कर रहे हैं ना एक्चुअली, हाल HAL, प्रोग्रामिंग। yeah, I'm actually using HAL to only to configure like the GPIOs right now. एंड इफ यू सर स्विच टू बेयर मेटल प्रोग्रामिंग, तो हाउ शुड मतलब कि कोड हाउ मतलब कोड हमें उस टाइम कैसा दिखेगा अगर आप बेयर मेटल में स्विच करते हैं इसको तो? We will be directly अगर using, इसी चीज को yeah, we will be like directly using our, what should I say, registers there. डायरेक्टली यूजिंग द रजिस्टर्स। Yeah. सर ये एलसीडी, लाइक आप एलसीडी यूज कर रहे हैं अभी एज आउटपुट, तो एलसीडी का कोई प्री डिफाइंड उसमें पहले से ही लाइब्रेरी है? Hmm. So, अगर आप बेयर मेटल यूज कर रहे हैं तो hmm. आप उसमें एलसीडी कोई प्री डिफाइंड लाइब्रेरी ऑलरेडी है उसमें उसके अंदर? नहीं, एलसी हाल के अंदर कोई प्री डिफाइंड लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है एलसीडी के लिए, पर बहुत सारे प्री डिफाइंड मतलब बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल है, पर तभी भी आपको उसमें आपको उसका पोर्ट कोड आपको बनाना पड़ेगा। जो आपका रहता है ना हार्डवेयर हार्डवेयर ड्राइवर कोड, वो आपको खुद से बनाना पड़ता है। लाइक सर ये आर्डिनो वगैरह में तो ऑलरेडी उसमें लाइब्रेरी होती है इसकी। हाँ, अपन आपने उसमें एक चीज़ देखा होगा, आप उस जो भी आप हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं, वो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप यही माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करो और यही उसके पिन सबको यूज़ करना पड़ेगा। हम्म। वो रेस्ट्रिक्शन रहता है ना। तो हम्म। मैं जिन लाइब्रेरीज की बात कर रहा हूँ उसमें सब कुछ होता है, पर जो आपका हार्डवेयर टू आपका जो डिवाइस है उसका जो इंटरफेस है, उसका ड्राइवर आपको बनाना पड़ेगा हमेशा, तभी वो काम करेगा। वो यूनिवर्सल लाइब्रेरीज होती है, पर आपको कुछ पार्ट ऑफ ड्राइवर आपको खुद से बनाना पड़ता है। एंड सर वो बनाते कैसे हैं फिर? वेल, आपको थोड़ा बहुत आपको बेयर मेटल कोडिंग आना चाहिए उसके लिए, या फिर जो आपका हॉल कोडिंग है वो आपको आना चाहिए, और ओ, एक्चुअल में कॉन्फ़िगर कैसे करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। मतलब आपको एटलीस्ट 20-30% आना चाहिए जो आप काम कर रहे हैं। ओके ओके। या जैसे कि आप नॉर्मल आपका कलर डिस्प्ले है, तो कलर डिस्प्ले पे अगर आपको उस पे कलर डिस्प्ले को फिल करना आता है, कलर डिस्प्ले नॉर्मल इंटरफेस आपको बनाना आता है, तभी जाके आप उन लाइब्रेरीज का यूज़ कर सकते हैं, जैसे एलवीजीएल है, लाइट लाइट वर्सटल ग्राफिक्स लाइब्रेरी। तो उसमें आपको डिस्प्ले का ड्राइवर कोड आपको खुद से बनाना पड़ेगा। ड्राइवर कोड को बाद में आपको हाल एलवीजीएल के उन पोर्ट्स पे आपको लगाना पड़ेगा। पोर्ट का एक उसका एक फंक्शन होता है, उसके अंदर आपको डालना पड़ता है, तब जाकर के आप उस डिस्प्ले का यूज़ कर पाओगे विद द लाइब्रेरीज, वरना आप यूज़ नहीं कर सकते। मतलब ओके आपको भी ओके। थोड़ा बहुत आना चाहिए काम। लाइब्रेरीज आपका काम इजी कर सकती है, और ये भी एक रीज़न है कि ऑर्डिनो वालों को ऐसे हमारे जैसे जो डेवलपर्स है वो ऑर्डिनो वालों को उतना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमने देखा हम्म। है कि उनको उतना बेसिक भी नहीं आता है। वो मतलब लगाया, वो लाइब्रेरी ढूंढा, लगाया किया बना दिया। मानता वो एक दिन में बना लेते, पर फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं मिलती उन्हें कभी बनाने के लिए, ओके। या वो लोग अपना हार्डवेयर भी चेंज नहीं कर पाते। ये सब इश्यूज रहते हैं उनके वजह से। ठीक है, तो हमने ये वाला किसी इसलिए किया कि हम जीपीआई को बस इनिशियलाइज कर रहे हैं, इसलिए हमने इस तरह से हाल में बना दिया मैंने। इसके बाद में हमारा कोड बनेगा, जो हमारा जो 7 सेगमेंट को डिस्प्ले को ड्राइव अपना यूज करने का बोलते हैं। ये तो सर आपने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है ना, स्ट्रक्चर वेरिएबल। या स्ट्रक्चर वेरिएबल फिर ये स्ट्रक्चर की बॉडी हो गई है जो आपने इसमें अभी आगे यूज करेंगे इसमें। नहीं, अभी इसका यूज खत्म हो गया है। यूज खत्म हो गया इसका? या यहाँ पे इसको कॉल किया ना हमने यहाँ पे हाल के अंदर। ओके, जीपीआईओ नेट, जीपीआईओ ए। या डोंट वरी, आपको ये कभी ऑर्डिनो में नजर नहीं आया होगा, बट इसी टाइप का ही स्टैंडर्डाइज कोड नॉर्मली हम यूज करते हैं जब प्रॉपर हम एम्बेडेड में काम करते थे। ठीक, ज़्यादातर जो ऐसे एब्स्ट्रैक्शन एसडीकेस होते हैं वो इसी तरह से ही काम करते हैं। ओके, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन, सो नाउ वी आर गोइंग टू एक्चुअली मेक आवर व्हाट शुड आई से एलसीडी इंटरफेसिंग कोड। ओके, सेकंड यूजर कोड void lcd command।
command _3 command, which we also may need to make like our delay. सर इसमें पॉइंटर्स का यूज नहीं करते आप? कर सकते हैं हम लोग शायद पॉइंटर्स का यूज़। आप चाहो तो मैं आपके लिए ये जो हमारा सेशन है हम उसको सिग्निफिकेंटली कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। आप चाहे तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। पॉइंटर्स लोगों को समझने में मुश्किल आता है, बहुत मुश्किल जाता है, इसलिए मैं पॉइंटर्स को डायरेक्टली यूज़ करना हम्म। पसंद नहीं करता। एंड सर आपने ये हाल में जो ये कॉल किया था स्ट्रक्चर वेरिएबल, हम्म जो आपने स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट किया है उसको कॉल किया था, तो उसको ऑलवेज एड्रेस से ही कॉल किया, जैसे आपने एम परसेंट यूज किया है, एम परसेंट दैट वेरिएबल स्ट्रक्चर वेरिएबल, तो हम्म। उसको हमेशा मतलब कि एड्रेस से ही कॉल किया जाता है? अब उन्होंने अपना जो सिस्टम है वैसे ही बनाया है, उससे मेमोरी ऑप्टिमाइज। ज़्यादातर जगह पे आप जब पॉइंटर्स यूज़ करते हैं तो आपका सिस्टम मेमोरी ये रहता है, मेमोरी इफिशिएंट रहता है काफ़ी ज़्यादा। ओके। या पॉइंटर्स यूज़ करने का वही रीज़न रहता है, जब भी आप पॉइंटर्स यूज़ करते हैं आपका सिस्टम काफ़ी ज़्यादा मेमोरी इफिशिएंट बन जाता है। इवन आपका वेरिएबल दूसरे फंक्शन में चाहे कॉल हो रहा हो, पर आपका आपने जो मेमोरी को अलोकेट किया था इवन किसी दूसरे हम्म। फंक्शन में भी, तो भी उतना ही मेमोरी वो अलग फंक्शन यूज़ कर रहा होगा। सेम मेमोरी, उसी एक ही मेमोरी यूज़ कर रहा है। तो अल्टीमेटली आपका मेमोरी यूटिलाइजेशन काफ़ी कम होता है। समझ रहे? एंड सर आप ये कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे आपने अभी ये फंक्शन आप ये बना रहे हैं वॉइड, ये हाँ। एलसीडी डिले, तो इसमें आप यू इन 32 टी अंडरस्कोर डिले डिले यूज कर रहे हैं, तो हम्म ये जो हम वेरिएबल मतलब बना रहे हैं डिले, तो आप हम्म इसमें 32 यूज किया है, हम्म, तो इसमें हम 8 या 16 भी यूज कर सकते थे, या हाँ। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं कि यहाँ 32 यूज करना है या यहाँ पे 8 यूज करना है या 16 यूज करना है? आपको अगर पता है कि आपको कितने बिट्स का डेटा आ रहा है तो उस हिसाब से यूज़ कीजिए। और मैं चाहूँ तो 32 दिया है, यानी कि मैं बहुत बड़ा नंबर इसको पास आउट कर सकता हूँ फ्यूचर में चाहो तो इशू नहीं होगा। मैं चाहता तो 64 भी यूज़ कर सकता हूँ, 64 भी अलाउड है। पता है। बट सर वो फिर मेमोरी एक्स्ट्रा वो यूज करेगा वही, हाँ मतलब आपका उतनी जरूरत। हमारे पास में इस वक्त 256 केबी का मेमोरी है। 256 KB का? दिस इज लाइक लॉट। मॉडर्न मॉडर्न 32 बिट जो हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स है ना, आप आपके साथ छोटा मोटा मेमोरी जो यूज़ हो रहा है, एक एक वेरिएबल यूज़ हो रहा है, 32 बिट का एक मेमोरी यूज़ हो रहा है, उतने के बारे में कभी सोचो मत। कोई अगर बोल रहा है ना यार वो पक्का वो हमारा 30-40 साल पुराना बंदा है। समझ रहे हो? उतना भी मेमोरी इफिशिएंट होने की ज़रूरत नहीं है कभी भी। अगर आप अरेज यूज़ कर रहे हो जिसमें कि 200 400 या 500 है, वहाँ पर आपको सोचना चाहिए, वैसे एक दो पे आपको सोचना नहीं चाहिए। ओके वो ओके। हमारे 8 बिट के ज़माने का बंदा है फिर वो, जहाँ पे हमें मेमोरी वेमोरी कुछ नहीं मिलेगा। आज के समय में इंटरनल फ्लैश और रैम बहुत सस्ता हो गया। अभी 112 केबी का फ्लैश के साथ में मेमोरी अपना माइक्रो कंट्रोलर अपने को 40 रुपये में मिल जाता है। एंड सर अगर ये हमें अगर जैसे हम कोई माइक्रो कंट्रोलर से कोई भी, मेरे एक ऐसा यूज केस मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे माइक्रो कंट्रोलर जहाँ पे उसने एंड किया फंक्शन, हम्म, मतलब अ, वापस वो वहीं से स्टार्ट हो, मतलब अपनी मेमोरी रिटेन कर सके, अगर वो ऐसा कुछ हो सकता है फंक्शन इसमें? मतलब पावर चला गया क्या?
हाँ, पावर चला गया, बट जहाँ जहाँ पे उसने लीव, जहाँ पे वो एंड हुआ है उसका फंक्शन, जहाँ पे जिस जिस फंक्शन पे वो पावर गई है, वापस वहीं से ही स्टार्ट हो। स्टार्टिंग से ना, मेन में जैसे मेन से स्टार्टिंग से ना स्टार्ट हो, बट आप जहाँ से कहते वो हो कि हुआ वो है। माइक्रो कंट्रोलर जो अपना लास्ट स्टेट है उसको मेंटेन करे। हाँ, लास्ट डेट, हाँ जी, वो उसको मेंटेन करके और उसके बाद से वो स्टार्ट कीजिए। फंक्शन के लिए कुछ है नहीं वैसा स्विच करने के लिए, ठीक है। वो अपने पैरामीटर्स को कंटिन्यूसली एक एक्सटर्नल मेमोरी में सेव कर सकते हैं। जैसे कि आप एफ रैम यूज़ कर सकते हो उसके लिए, ओके। एफ रैम। एफ रैम एक्चुअल में रैम नज़र आ रहा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, पर वो एक्चुअल में नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जिसको आप ओके लाइफ ओके टाइम यूज़ कर सकते हो फॉर एक्सटर्नल डेटा स्टोरेज। और ये इसका लाइफ स्पैन इतना है कि आपकी 100 जिंदगियां खत्म हो जाएगी पर उसकी ड्यूरेबिलिटी खत्म नहीं होगी। ओके ओके ओके। हाँ, मतलब एंड इंसान सर की ये 100। फ्लैश में पॉसिबल नहीं है? वेल, अगर आप चाहते हो कि आपका फ्लैश अगले लाइक क्वार्टर सेकेंड में बर्न आउट हो जाए तो हाँ, आप कर सकते हैं। आपका क्वार्टर सेकेंड का आपको लाइफ चाहिए तो वाई सर? अगर मतलब उसमें ऐसा, अगर मतलब उसमें ऐसा कर सक पॉसिबल है ये चीज करनी फ्लैश करना में? पॉसिबल है, पर आपको स्टेट, अगर आपको किसी माइक कंट्रोल का सेव करना है, मतलब सेव मतलब कि स्टेट हम्म नहीं होते पर पैरामीटर्स होते हैं। हम्म जैसे कि कोई टाइम पैरामीटर हो गया है, कुछ उसमें लॉग स्टोर कर रहा है, कंटिन्यूसली चेंजिंग हम्म। लॉग है, तो वो एक्सटर्नल एफरैम में ही करना बेटर रहेगा। अगर बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, मतलब कि एक सेकंड में 200 300 500 बार उसको अपडेट कर रहा है, तो ओके वो एक्सटर्नल फ्लैश में ही सेव करना हमेशा बेटर रहता है, एक्सटर्नल एफरैम में। डिपेंड करता है कि आपको कितना ड्यूरेबिलिटी चाहिए, कितना लाइफ चाहिए आपके मेमोरी का, उसके ऊपर सब डिपेंड करता है। आप बहुत सारे अलग अलग चीज़ें यूज़ कर सकते हैं कि आपका एक मेमोरी एड्रेस बर्न आउट हो गया तो वो दूसरे मेमोरी एड्रेस में स्टोर करेगा, फिर बर्न आउट होगा फिर अगले में स्टोर करेगा। ऐसा आप बना सकते हो, एंड इट्स ऑल डिपेंड्स कि आपको क्या करना है करके। ओके, ओके ओके। ठीक है। चलो एक छोटा सा कोड बना देता हूँ आपको, इसलिए हम कमांड का कोड लिखने वाले हैं। तो इसलिए ठीक है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं मुझे थोड़ा सोचने दो, फिर इसको लिखते हैं। ओके, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन एक्चुअली आर एस के आईडी है तो आईडी ही लिखना पड़ेगा। फिर डिफाइन सी एन आई डी। वैसे कोड कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा सबके लिए? ऑलरेडी लाइक switch okay, so we are is this code is not complicated for people, right?
RS के लिए RA8 है। सर ये कोड अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ बेसिक सीखना पड़ेगा? Yes, you need to understand C and a little bit of bare metal. But are you like attending this class from like first lecture? पहला लेक्चर मैंने नहीं किया है, कल वाले इसमें था मैं। तो Okay, okay, okay. Uh, सी प्रोग्रामिंग वाला कुछ अ, हिंदी लैंग्वेज में अगर कोई पढ़ाता है ऐसा कोई यूट्यूब चैनल वगैरह कुछ सजेस्ट कर सकते हैं क्या? एटलीस्ट आई कैन गो थ्रू इट। हिंदी लैंग्वेज जो कोई पढ़ाता है सी लैंग्वेज, हम्म। ऐसे भी ताकि बहुत एटलीस्ट सारे। इजीली इजीली समझ में आए। वैसे तो बहुत सारे हैं यूट्यूब पे, लेकिन क्या है, बहुत सारा डिस्कनेक्ट हो जाता है बीच बीच में। तो अगर प्रॉपरली सिखाया नहीं है तो फिर वो इंटरेस्ट निकल जाएगा। मैंने 2-3 चैनल्स मैंने चेक किए थे, ओके। लेकिन अगर आप सजेस्ट कर सकते तो वेल एंड गुड। तो समझा भी कर सकता हूँ। मुझे ऐसे कुछ चैनल्स पता नहीं है इसमें इंडियन वाले। ओके। हम्म। नहीं, चैनल इंग्लिश में पे भी रहेगा तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा बेसिक्स अगर समझाए उसमें तो दैट वुड बी गुड। हाँ वो तो है, वैसे होना चाहिए। सर आपने कहाँ से सीखी थी मैं तो भाई बेयर खुद से मेटल? मैं तो भाई खुद से सीखा था और यूडीमी के कुछ लेक्चर्स लिए थे। किसके? यूडीमी पे कुछ लेक्चर्स लिए थे मैंने। अच्छा, यूडीमी पे। हाँ उससे सीख गया। Everybody is able to understand what I am actually writing here. Okay, let me just clarify what I actually done here. Okay, and why I made this many like functions to like preempt it. It is just to make everything like simpler to understand, and so that everyone from like coming from the Arduino background, and even for the when anybody else going to read this code after like few years, so he can understand what we actually written here. Okay, I haven't like provided all the comments and everything, but I do going to put it there eventually, maybe. Okay, and okay, what we did here. In this function, we are actually going to set our RS and EN pin. This is for like showing this. Our LCD has like RS pin to determine that if the command is like if the sender data is command or the data type, and EN is for like enabling or to tell the display that this is your new data command. Okay, new frame of data is there. Okay. Just for controlling this specific things, we actually provided this call structure and to control the specific things and status of the stage of this specific those things. Yeah, right. And this specific function controls our data lines of our LCD to update and set our data lines. Okay. We first in this 89th line we are actually clearing all these 8 bits of our so LCD, and in this 90th line we are setting it with our whatever data we want to put it there. Okay, and the second will be like to provide uh, functions to send like commands and data. LCD data. So, data. Okay, we actually send the data and command.
Okay, let's just write the code now. First we are going to like set our address SCD RSCN to SCD RSID stage will be 0 for command. Okay, set as command. Okay, SCD RSEN set LCDEN ID set as 0. I have a question to ask. What kind of transition we get in like our LCD? It is from for the EN. It is 0 to 1 or 1 to 0 for like telling the LCD that you got a new set of commands. It's 0 to 1, I guess. It's 0 to 1. So, okay, then we will do it 0 to 1. I am actually going to show you one website to like get those things. Or like we are already like in some complex like communication here. So let me just like show you one website which will like going to help you now. Okay. Let me just share you one more website. It's called Electronic Wings. Actually, I haven't visited that website for like quite a long time. So yeah, this will be like quite beneficial for us. Okay. Really see the okay, it is Electronic Wings. It is like a okay website for beginners, and I haven't like visited for probably like 3 years, maybe 4 years. Okay, they got quite a lot of things going on. We will just go to like the pick or Arduino, maybe yeah, some other one. Okay, let's just go to like Arduino, and we can find uh, some of the projects like where we can find like LCD. We are actually going to look for the LCD. Yeah, here they have an LCD 16:2, and we may able to find there's some of their codes here. Okay, like there's the LCD initialization code, LCD command, what they had it. For the LCD command, RS should be equal to 0 and EN should be 1 and should transition from 1 to 0 to tell the LCD that the data is being sent it to the LCD. Okay, and for the data it's vice versa. RS should be 1 and the EN should follow the same methodology. Okay, okay, got it? Hello? Yes. Yeah, no problem. Okay, so what was it? It was like 1 to 0. Yeah, it was 1 to 0. Okay, CP data send. It will be that is sending the command. Okay, so it will be like a CD delay. We are just going to provide like a small delay functionality. Okay, we are going to provide like one more delay here. It's just over the precaution.
And second will be the command. Sorry, data. LCD data. Okay. LCD line. We should not put it this way. It's still showing that it's still showing that you are displaying the electronic wings web page. Okay, 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 No. okay. I haven't like okay, always like tell me what's going on. Thank you. Okay, so now you see it? Yeah. Yeah. Can you tell me what else we can write this LCD? I would like type it like data. But we are like already have like this data. I don't want to make it confusing for the people when they are using it. So we can like LCD data line set or something like that. Yeah. Maybe this will be like less confusing for the person whenever like they are studying it. Okay? So yeah, this one will be set. LCD data line set. It will be like data and okay. The same will be written here. Command V. It will be one and set as data. Okay. Now next will be LCD initialization. Void LCD initialize void. Okay. First will be LCD 0 double line command 0x. I just forgot. Okay, right? Okay. It's something 80, right? For the first line, first column. Yeah, it was 80, but yeah, it was 80, and second one was 30. 60. C, 0x6 0c, right? C for cat. C0. Yeah, yeah, c0. LCD 0 No, double no, line not 0C, not 0C. It's C and then 0. c0. Yes. Yeah, is it right? Yes. And next will be what? C0 and then I forgot. uh, 06. HCP CO double line command 0x01. So I will be setting the display, and then will be LCD CO double line command 0x80. We are like it is like pointing the marker in some point. Okay. Set the display. Set the cursor. Okay. And just display data of A. Okay. So what we are going to do here is that we will call that function LCD initialize and then so, and just we are just going to compile this first. Okay. Okay. Compilation is already like done. Let's just go to the Proteus.
the photos. Let me share the display. Okay, you able to see the proteus here? Yes. Yeah. So just go to our project. My students are going to work it. And there is like LCD diagram, values. Okay, we only got the ELF file here, which we don't want. We want the binary file or the hex file. ELF file do works on the Proteus, but the Proteus does not works well at that condition. Build settings. Okay, we will go to the build and set it for producing hex. Apply, apply and close. We will rebuild our system and I quickly go to like to find wherever I just wanted to go. Project my instance LCD and then to the people and we got our hex file here. And let's see if my code works at first. Okay, it did not work. Let's see what kind of mistakes we did. Let's see it. Hey, hello. Yes. There is this another person. She says that your entire window is not showing. Like the half of the LCD is visible. So she want it. It would be better if you could share the entire screen. Oh, dear, he was sharing the zoomed version. So he was zooming, so we could see the proper wiring. Yeah. Yeah. I was actually Because of zooming into that. yes. Yeah. Okay. We may have like made some mistake in our design. Okay. So let me like find out what kind of mistakes we did in coding here. Okay. To be frank, I am like writing the code for the LCD for like after like an year or so. So I'm no longer that much code I'm writing it. Just a minute. Yeah, I see that I made some mistakes. Those. Okay, sure. Yeah. So what kind of mistakes we did here? It's not A0. We don't go it immediately. It's not C0. Let's see. Let's just me review my command and data. This is for data. It's 0. User delay. Okay, I'm pretty sure no mistakes have been done here. Data line set. Okay, data line is like working properly. 8-bit, 8-bit. Yeah, 8-bit, 8-bit is going so there. That one is this one is okay. No issues there. No issues here. I'm sure that most of the code is like good, good code. Okay, I'm pretty sure we did some mistake at this point. Let's just go to like our electronics wing. Something else. Windows, Windows, Windows. Let's see our electronic wings what they have like for us. Okay. For the LCD initialization, they have put like 38. Okay, we are not going to put 38, but we are going to put like 01, 0C, and 06, which will like get this done. This two line at initialization for active LCD. We can do that. Okay. To show something else. Okay. If it does not work, I'm actually going to dig into my like old code and find out what the mistake is. But now just try to find out what it is. Okay, send and display on command 0E0C. Okay,
It's not C0. Yeah, not C0. It's 0C. Yeah, yeah. Let's see if it works now. Yeah, now it works. It's still the अब electronic page. Okay, it's electronic page. yeah, Just please share your current screen. yeah. Just a minute. Where's, yeah, always like tell me like what kind of mistakes I'm doing. So yeah, can you see it now? Yeah, okay, so I Yeah, understood it wasn't 80 or C0. Okay, I got It's it. it's 0C0E. 0C is for initialize the display without cursor, and 0E is for initialize the display with the cursor. I'm actually going to show you that. Okay, we are actually going So back that to like specifically for LCD are common for all type of devices. what? I That haven't so are initialization understood. these is values specifically fixed? for Okay, can you see like my code LCDR. right now here? Yes. Yes, sir. Yes. Now, 0C is for like initialize the display with uh, with uh, okay. 0C is for like initialize the display without the cursor off. Okay, and 0E is for initialize the display cursor on. Okay, So it's clear are now? these values fixed like Yeah, 0E they, for yeah. They are fixed values. Fixed for okay. LCD or it's fixed for um, all devices. Well, it is specifically specific for the LCD. LCDs. Yeah. So we So we have need to to refer data sheet for every time using specific devices Well, am I right? you can go and use the LCD, or you can go and use some kind of library for that. Okay, let me like show you that. I have to put it like 0E right now. Okay, and let me like share the window here again. Present something else. Windows. Okay. Now we will have like a cursor here. Okay. Let's see. Yeah. Did you see the cursor? yes, sir. Yeah, you see the cursor. Okay. Now just let me do one more thing here. I'm going to present my display here right now again. My code window. Okay. You see my code window now? Okay. Here is like 0, 6. It is for like auto increment. Auto increment. Auto increment. Okay. Auto increment of cursor. Okay. 0C reset the display and set the cursor. And this is to deliver the whatever the information you want to send to the display. Okay. Send to data to the the display. Okay. In ASCII format. Okay. So we have to remember all these values when working with LCDs. Yeah, you do need to remember all these values because, but to be frank, there are not many values are there. There are probably like 10, maybe 12 values only. Okay, okay, So there is not many, and you can always like go check out this kind of website for help. okay. That's why I actually showed you this kind of electronic wings and other such. Okay, now there is like one more problem. We can't like display a single character each time. Okay, we need to like put a like entire string into that. Okay, how can we do that? We are going to do it with the help of a pointer. Okay? I'm going to make another function void lcd, yeah, tr display string string. Okay, this will be an char star ptr. It will be char pointer.
Okay, then there will be while loop, and star ptr is not equal to not equal to uh, null value. Okay, okay, whenever it is not equal to null value, just lcd data. Okay, I did made a mistake here. Okay, now it's happy. lcd data star ptr, and we will do an increment of pointer, or we can say ptr plus plus increment pointer, send the data to display. Okay, so now we are like written like this a value, but now I want to write something else, like a complete string. Okay, so what should I call? Cd send, okay, display string, drs display string, and I will put the value in like double quotations here. Okay, what should I put here? What message do you want? Just tell me. My name. Okay, what is your name? My name is Purnima Chaulwar. Okay, can you spell it out for me? P Yeah, O sure. P O Pournima R N I M A Purnima, and next is Chaulwar. C H Choulwar. O U W. Yeah, okay. We got Purnima Solwar here. Okay, I'm pretty sure this my code editor doesn't like it because it put like this red underline here. We will still go with that. Okay, It's more, I guess it's more than 16 characters. So we'll see okay. Let's what the see. LCD displays now. Okay, okay. It did write the Purnima Solwar. And does anyone else want to put their name on the display? Did it displayed? Okay, just a minute. Okay, you did not like see it. I actually did it, but I forgot to share the display. Okay, actually forgot I stopped like sharing my entire screen nowadays. I just started to share Yeah. only the important screens now. Okay, here, let's see what does the display says. It's Purnima Solwar. Okay, wow. Yeah. Does anybody else want to display their name on the screen or display their name on the display? Hello. Does anybody else want to do it? No, sir. No, just come forward and say just like the Purnima. Okay, it is kind of a fun to have. I actually personally don't like the professional people. Okay, so yeah, we can have some fun with that. You are bearing my jokes, this not so funny jokes here. So we can have some kind of real fun here. Okay, yeah. So let me just explain what we actually did in our code here. There. Okay, just let me share my code window. So then something else, Windows, and sharing the window. Yeah, let me just tell you what we did here. We actually did use a pointer here, pointer, just like as one of my friends asked me to do, that why we are not using a pointer here. Okay, we had used a pointer which is pointing to a string.
which is dynamically allocated. So it is not allocated in some uh, what is visual. It is like stack or yeah, heap and stack memory. But yeah, I don't know which one it is, but it is like a temporary RAM part. Okay. So whatever the string is putting there, we are just every time when we are checking it, we are just checking that is the value is null value or not. If it is not a null value, we are simply displaying the whatever value is pointer is pointing to and incrementing the pointer. And this while loop will go until the pointer reaches a null value. Okay, we can make it like a more safer here by just putting a small information like uint8 underscore t lv counter which is equal to 0, and every time it is done a plus and lv counter. Okay, let's just do it like a minus minus 2. Yeah, it's a minus minus 2 and make it like an 40 characters long. Yeah, we can do this too. Yeah. Can anybody tell me like why I actually put this kind of information here? I just put like an LV counter and use this specific kind of situation here. This specific condition here. Put a LV counter extra and minus minus it. Can you tell me why I did it? Did that? Hello. In case it does not find any null characters, Yeah. um, after 40 character it will stop displaying string, Yeah. It is to just for a avoid caution. additional displaying of characters. Yeah, it is just a caution that if someone is like using our library or anything, it does not get stuck in some kind of unknown situation. Maybe some person probably going to like point it to something, some random address, and those address does not have any null value, so it still need to like exit this while loop. So we should like provide it with some kind of like a overflow exit method. So that is like for that specific task. Okay. So I'm pretty sure I had like teach you like how can you do it. Okay, and I'll tell you that this is like a zero. This is like a set the cursor to a certain address. Okay, like from the first address 8, there is like C, D, and other like other part. I want you to like understand it. The specific setting the cursor address. Okay, display set. Okay, this is like quite important. And there is and we are and this time the configuration for the LCD was the 8-bit LCD. Okay, only one solver. Okay, yeah. Does anybody else have some questions for me? Hello. Do anybody have any questions regarding today's class or something else? How do we clear the LCD? Like I have written my name on it. Now I just want to clear and don't want to write anything on it. Okay, that's super easy to do. Let me just get to the code part again. Sharing. Okay. As we had like shown you like I've written your name here. I want to like erase it. First, what we are going to do that I'm going to provide it with a small delay because I do want to see your name for a while here. So I will like provide some delay here, probably a long delay. Yeah, what is this like so this will be like enough long. And then I'm going to provide with a command of clearing display. Command 0x01. This is LCD clear command. LCD clear and the command. Okay. Just provide a command of 0x01 and it will clear itself. Let me share you the Proteus. Something else.
Let's see what we get now. Okay, we see the Purnima's name and the command is and the display is clear now. Okay, Yes. yeah. Doubt. At the beginning, you have not explained about how we can connect these LCD pins because I'm damn sure everyone might work with I2C while Yeah. connecting this LCD display. I worked before 2 days. That's why I listen up to now. But if anyone see this new, how they can Okay, understand the I have to video? tell you one thing that I2C display is nothing but an IO expander they are using. That's a TI IO expander. The coding is still same, but with the help of an IO expander only. The fundamentals will be the Sir, same. I can't understand. Uh, the question was that how can we interface an I2C LCD interface? That because like everybody is using that to save the pin counts, but No, no, man, no, not. I'm not asking about that. You have not explained about how we can connect without I2C. Just you connected and you programmed it, but you have not explained why you did this connection and why you passed those commands. those specific commands. That's what I'm asking. Ah, Okay, yes. I No, did no, actually. not about initializing command. I'm Okay, about zero F something and amp okay, and character along with the okay, ASCII value. okay. Let me like share it again. You haven't like attended my like first and second class, right? Yeah, yeah. Yeah, that's why you have like hard time to understand that. Okay, here you are asking about like this command, specific this command, right? Yes. Yeah. I am actually clearing our this our we actually have like connection with our LCD, right? So I'm clearing that GPIO pins right now. I'm setting it to 0 and then resetting it to whatever data types we want to set it for. And this is the 0xFF just to it is just for a precaution. So we did not like what should I say set some unknown We should data. not touch other pins from A8 to A15, but like only 8 will be Yeah, changed. 8 so values will be changed, am I right? yeah, it is only for that. This part is only for the precaution, just for the precaution. I'm just taking a precaution, making it like hardened for that. I don't know if in the future some other people is going to use my library and put some unknown data that they simply don't know and they pass something unknown. So I'm just trying to make sure that my library does not interfere with some other functionality of my controller. It's just for that specific purpose. Okay, I'm like clear. Yes, sir. Okay, Yes. Have you explained anything about the enable pins pulsing method and command mode with RS or data mode with RS in second class or even in this class? what data mode with RS? We need to make it zero. RS should be zero to pass command and one Yeah, should pass data. That you have not explained. That what I am asking. I actually explained it like already, but I need to explain. In second in class two or at the initials of I have this to ask class. you one thing. You joined the class like significantly after the class is already started, right? I joined at 10:08, I think so. Before 10:20, I joined. Okay, so I probably sure that I had already like explained that, but okay. Okay, for the command, the RS pin should be like a 0, and for the data, it should be RS pin should be like 1. Like I have like written here specifically. That what should you do?
and probably like provided a comment for to show that what we are doing here, like set as data and set as command here. Okay. Okay. Yeah, I Okay, did sir. explain. I did explain it like for quite a long time. I probably took like 5 to 10 minutes to explain that specific information. And I did play around that specific information and try to like juggle it, asking question to the viewers so that people know that we are doing it or not. I did try to engage with the people, and I'm sure that Purnima like try to help me, and maybe like some other guy also try to help me that at that moment. Okay, Okay, sir. okay, I did try to explain that. Okay, okay. Any other questions? Will also help us to learn I2C, am I right, in future classes. Yeah, in the future classes I do, and maybe our class duration is like already increased. I'm actually adding like 3 extra classes into our curriculum because I did not mention it on the curriculum before. But I realized that they are actually super important because in the past I did took quite a lot of classes before, and I did mention those and there like the CD1 and PWM there will be, and also there will be like one library interfacing. I actually made a 7 segment display library to interface an external LCD driver. So I'm actually going to explain you how to integrate that into your own code. Okay. Mm, okay. Any other questions? सर ये सी के लिए एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। हाँ, कुछ है? कुछ सजेस्ट करोगे आप या सी प्रोग्रामिंग का या सी आपके पास प्रोग्रामिंग कोई? का आपको यूट्यूब में बहुत सारे आपको क्लास मिल जाएंगे दुनिया भर के। आप उन सबको रेफर कर सकते हैं कि मोस्टली क्योंकि सी लैंग्वेज और एम्बेडेड में मतलब कैसे कह सकते हैं 30-40% का डिफरेंस है, और एम्बेडेड सी में आपको बहुत सिग्निफिकेंटली आपको बेटर काम करना पड़ता है। एम्बेडेड सी प्रॉपर कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, एक्चुअल कंप्यूटर लैंग्वेज होता है एम्बेडेड सी, कंप्यूटर का एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक्स लैंग्वेज होता है। तो या तो जो हम जो सी यूज़ करते हैं वो एक यूज़र इंटरफेस से ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, आपको उसको सीखने के बाद में आपको इसको सीखने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, बट आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा एम्बेडेड सी को सीखना, अगर आपको सी आता है तो। ओके। ओके। एंड सर ये जो आप ये क्यूब एमएक्स यूज कर रहे हैं ये हेक्स फाइल जनरेट करने के लिए, हम्म। तो क्या ये मतलब कील आईडी यूज कर सकते हैं सर इस स्पेसिफिक माइक्रो कंट्रोलर? आप एसटीएम के लिए मैं बोलता आप काइल यूज़ कर सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप काइल यूज़ ना करें, क्योंकि काइल में ओके आपको उतनी फंक्शनलिटी नहीं मिलेगी जितना आपको क्यूब एमएक्स में मिलता है। ओके ओके। या आपके पास में अगर मान लेते हैं फरारी है, तो आप हम्म। मारुति की वैगनआर क्यों लेना चाहते हैं? सही में सर एक्चुअली मेरे पास कील ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है बट आपके पास क्यूब में एमएक्स इंस्टॉल्ड में। है, पर क्यूब आईडी फ्री है ना, हम्म। और वो सिग्निफिकेंटली बेटर है। ओके ओके। या आपके तो बेटर चीज आपको फ्री में है, आप वैगनआर यूज करने के मूड में क्यों है मेरे को समझ में नहीं आया। नहीं नहीं सर, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि ये कील जो है ऑलरेडी मेरे पास लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है, हाँ, आप कर इसलिए सकते हैं, मैं। कीजिए आप उसको, आपको मन करते तो आप कीजिए, पर मेरा रिकमेंडेशन है आप एसटीएम के लिए सिम क्यूब आईडी यूज कीजिए, ओके ओके। क्योंकि सिग्निफिकेंटली बेटर है। हम्म, हम्म। ठीक है। और कोई छोटा मोटा Sir, क्वेश्चन? while conversing, can you please use English even for their doubts? Because I can't understand because I'm from Tamil Nadu. I Yeah, can only understand English. the communication was going on for the one-to-one communication with like my student here. So he asked in the Hindi, so I answered in the Hindi. He questioned in the Hindi, so I answered in the Hindi.
You're asking in English, so I'm answering you in English, and most of my I can classes. understand, Yeah, but meaning I'm that. actually taking the entire class in English just so that all the students will understand it. But because some of my students I actually see here like they don't understand English very well, so I do need to communicate with them in Hindi so they can understand it. The same problem you have. Okay, Yeah, the okay, same okay. yeah same problem you are having with the Hindi that you don't able to understand it. The same problem they They have have in that English. yeah they don't know, they actually do know English little bit but not properly. So yeah, Okay, sir. Okay, sir. okay. So I do need to communicate with them with in Hindi. Yeah. Okay. Okay. So what Okay, will be okay. the okay? So any other question, doubts, or anything you want to ask? Sir, I need some homework. Um, I can So do. if you need an homework, did you like in the part of like my second lecture, yesterday's lecture? But I seen that in YouTube video. Okay. Are you part of like the this other group, right? Other STM training group, right? Two groups, specifically who paid that and not paid. I'm in both groups. Don't worry about that. Um, the YouTube video will be shared in like both the groups, but yeah, I'm actually doing it for the one reason that in some of the classes, some other people comes who actually don't want to like learn just to make a noise here. So that's why that filtration I made, and no more other reasons. But the YouTube videos will be shared with everybody. Okay. Okay, And sir, I yesterday, need some homework. in the yesterday's class, I did mention a small homework there. I want you to like provide. I actually did like 50% of the work in the coding, and I left 50% to the students, and I did give them the homework to interface button and do the increment and other kind of whatever kind of project they want to do with it. Just to excite me, just show me something that you did. Just try to make something Okay, project out of okay, it. sir. Okay, Try to do the same with the LCD. Try to integrate an button. Try to put some kind of an, name, different names to try to do some animations. Try to do something with this LCD and whatever I taught you before. Just try to combine them and make something out of it. Just try by yourself. Okay. And can I ask what is your age right now? I'm 19. I'm second year. I'm pursuing second year. Okay, so you're quite young right now. Um, Okay, yeah. quite young. Don't worry. Um, Sorry, still we will understand. okay. But I have Okay. some prior knowledges in Arduino and ES32 world, but I'm trying to enter to STM32 also. Yeah, You you can actually. even find my latest project in Electronic Wings contest that Okay. pursues high views. If you have free time, check it, please. Okay, I actually haven't visited. Today actually visited the Electronic Things website like after 2 maybe 3 years after. So yeah, I may going to get see what new is going on there. Okay. You both doing freelancing or you only, sir? You only or What? Me uh, and whom? your I know, sir. I watched the YouTube video. You forget to you screen recorded that WhatsApp messages to from that I Yeah. confirmed. I already spoken with Nam related to this embedded C. Okay, we both kind of do freelancing and she has a job too. Oh, okay, great, great. Yeah, that's why today I was a little bit cautious. Yeah. Yeah, and you already spoke with her. Ah, yes, yes. Okay, and did But you no, mention? from yesterday video only. Okay, and you Yesterday did YouTube mention, video. and did you mention all these things with her? No, no, sir. Okay, No, okay, thank I you. conversed with her before several months. Okay, okay, you actually Uh, talked with her like 12 months before.
12 not before 2 months that Okay. Okay. You can like talk with her and ask her that if you need her some help. in company's group. From that Okay. I converse with. Okay. Okay. Okay, I know another doubt. Why we need to use these method of pins for LCD instead of using I2C, which is better? Um, Well, I I2C, hope for I2C, I should say that it is significantly better, but it's the extension of the GPIO. Okay, that's just an GPIO okay, expander, not not some kind of a display driver. That's just an IO expander. So you do need to uh, manually toggle all the okay, GPIO pins, okay. even in Then that IC too. But just you have to convey the all the commands with I2C with that IC. Okay. oh, okay. Okay, 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 sir. Okay. Any other questions? No. So tomorrow you are with just communicating your or any specific Actually, I'm go like tomorrow. today. Actually, tomorrow I'm going to my hometown. Maybe if I get my uh, like railway ticket. If my railway ticket is confirmed, I'm probably going home tomorrow. Oh, okay. So yeah, I'm going home. I'm just going for to give a vote